Hello dear friends, how are you all? Welcome back to my channel, The Untitled Education. My name is Ritesh. Now today we are going to come up with a new different topic and a different subject. It is called as physical education. This is a subject which is there in class 12th and 11th. It is an optional subject which is available to the class 12 students, and this is going to be a very effective video for the students who have opted for physical education subject as their optional subject. Now there are most of the times that students are taking this subject quite lightly in the sense that they are not paying that much attention toward this subject. As a result, there are so many cases which I have literally seen in front of me that the students who are there who have opted this subject, they are passed in several good subjects like physics, chemistry, maths and bio, but they are failed in this subject. See, just because they did not pay attention to this subject, although it's a very scoring subject, and just because you did not pay attention toward this subject, you are going to be in a big loss. And therefore it's very important for you all to understand this subject also equally well as how your major subjects are, right? Although it's a optional, but do not keep it as an optional, otherwise it will keep you as an optional forever, alright, in your result sheet. Okay, let's begin with this chapter. It is called as planning in sports. This is class 12th. Physical education syllabus that we are going to cover here. And so we have here the first chapter called as planning in sports. Let us begin with this particular chapter. So, beginning with this, what do you understand by planning? Okay, the term planning is also very important when we study this particular chapter called as planning in sports. Let us begin with that. So what do you understand by planning? Isn't it? There are so many definitions are there in the market that planning is this, planning is that, a future vision which we take a future proper plan, okay, and so many more things are there which are being told to us by people, okay. So what is the meaning of planning actually that we have to understand? At the same time, we have to understand it from the sports point of view. Okay, I am myself a teacher, a sports teacher, a physical education teacher, where I teach students karate and volleyball and the other subjects also, and I also take several physical activities also. I conduct physical trainings also. I conduct yoga as well. So I know how important it is in the field of sports to have a plan before doing any activity. Okay, so therefore let us begin. What is meaning of planning, and specifically from the point of sports? So planning plays a very vital role in the field of life. Okay, as you know it very well, without planning nothing can take place. You have to do an activity, you need a plan. Okay, you need a plan for doing any activity so that activity goes proper. Okay, that activity takes place in the rightest manner how we want it. Okay, so physical education and sports play a significant role in the holistic development of an individual. What is this thing? Okay, see, not only studies are going to help you in life, but then of course developing yourself physically and having the knowledge of it and having the knowledge of sports, playing sports in your life is going to give you an all-round development in your life, right? So only the studies or only the bookish knowledge is not going to help you. Sports brings you the practical knowledge of life, right? Yeah. So to achieve holistic development, we need to do proper planning. It is rightly said that failing to plan is planning to फेल. अगर हम लोग प्लान करने में फेल हो गए, इसका मतलब हम लोग फेल होने की तैयारी कर रहे हैं, isn't it? Okay, failing to plan is planning to fail, right? So that is what the thing is. Now we'll be discussing about some of the standard definitions also about planning. What is the meaning of planning? Planning is the process of putting thoughts together and organizing activities required to achieve desired goal. Okay, हमारे जो भी thoughts हैं हम उसको एक organized तरीके से हम लोग step by step lined up करते हैं. Okay, alright, और उसको execute करते हैं. इस particular process को हम बोलते हैं planning. Let's say for example, I have to go from point A to point B. Okay, now for going from point A to B, I know that in between, okay, there is a small hole. Okay, so I need to have a plan saying that I will be either jumping from that particular hole and then I'll be going, or I'll be taking a small detour जहाँ पे वो hole नहीं है.
दिस इज नथिंग बट अ सिंपल एग्जाम्पल, ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये मेरे मन में प्लान था, या तो मैं उसके वो होल के ऊपर से कूद के जाऊंगा या तो फिर साइड से जाऊंगा, ओके. बट इफ आई डू नॉट हैव एनी प्लान, ओके, आई सिंपली गो ऑन, चलते जाऊंगा तो सीधा गड्ढे में गिरूंगा ना, isn't it? Don't you think so? So that is what the thing is, okay. Organizing your thoughts, हमारे thoughts को एक तरीके से organized manner से उसको उन thoughts को organize करो, okay, and then execute your things whatever you want to, right? Second important thing, according to Mitchell, okay, Mitchell एक अच्छे person है, प्रख्यात person है. Planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objectives, to solve the प्रॉब्लम्स एंड फैसिलिटेट एक्शंस, ओके. एक प्रकार का स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना होता है. प्लानिंग का मतलब होता है एक प्रकार की स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना, सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड फैसिलिटेट एक्शंस. अकॉर्डिंग टू एलन क्या बोलते हैं? अ प्लान इज अ ट्रैप लेड डाउन टू कैप्चर द फ्यूचर. एक प्रकार का जाल है जिससे हम फ्यूचर को कैप्चर करते हैं, ओके. फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि मुझे पॉइंट ए से ए टू बी जाना है, ओके. गोइंग टू पॉइंट बी इज नथिंग बट द फ्यूचर, इजंट इट? सो एक प्लान, एक ट्रैप ले डाउन करना पड़ेगा कि मुझे पता है ये बीच में होल है, तो मैं एक ट्रैप ले डाउन कर रहा हूँ कि मैं या तो कूद के जाऊंगा या तो फिर साइड से जाऊंगा. सो दैट इज व्हाट इट इज, ओके. अ प्लान इज अ ट्रैप लेड डाउन टू कैप्चर द फ्यूचर, राइट? यस. Now let's move forward. Okay, there are so many other factors that we have to see how it is important to have planning in sports. अगर हम लोग स्पोर्ट्स खेलते वक्त या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते वक्त अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है. Therefore we need to understand the objectives of planning. क्या मुद्दे हैं, इसके मायने क्या है प्लानिंग करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले प्लानिंग करने का इंपॉर्टेंस क्या है और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट. Let us see. Very first one, to reduce the unnecessary pressure of immediacy. Okay. For example, मैंने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया. Okay, I organize the tournament on time or on the very right time. Balls are not there. Okay. So what will happen? I will do hot pause, isn't it? Okay, एक unnecessary pressure आएगा मेरे पास क्योंकि मेरा टाइम जाएगा बॉल ढूंढने के लिए, बॉल लाने के लिए. Okay. See, these are the things. Okay, to reduce the unnecessary pressure of इमीडिएसी. फिर घाई में मुझे जबरदस्ती में या फिर जल्दबाजी में मुझे कोई भी लोकल क्वालिटी का बॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबल नहीं है. तो ओके, सो टू रिड्यूस द अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी वी डेफिनेटली हैव टू डू द प्लानिंग करना बहुत जरूरी है ताकि मैं अननेसेसरी प्रेशर जो मेरे ऊपर होता है वो कम कर सकूं. ओके. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल दी एक्टिविटीज. इफ यू हैव अ प्लानिंग, अगर आपके पास में एक प्रॉपर प्लान है, ओके, तो आप ऑटोमेटिकली सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एक स्पोर्ट्स का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसमें अलग अलग प्रकार की कमिटीज है, मैंने अलग अलग ड्यूटीज दे के रखी. बट अगर मेरे पास उन जिन लोगों को मैंने ड्यूटीज दे के रखी है, टू ऑल दोज पीपल हुम आई हैव अलॉटेड द ड्यूटीज, इफ आई हैव अ लिस्ट विथ मी, द नेम लिस्ट मी टू हुम आई हैव गिवन विच ड्यूटी, आई विल बी हैविंग अ गुड कंट्रोल ओवर द सुपरवाइजिंग दिस एक्टिविटीज. हाँ, अगर मुझे कोई भी चीज देखनी है तो मैं सिंपली लिस्ट में देखूंगा और डायरेक्टली मैं उस पर्सन से कॉन्टैक्ट करूंगा, ना कि ये पूछूंगा कि मैंने किसको क्या ड्यूटी दी थी. Isn't it? So to maintain good control over the activities, planning is very essential. Isn't it? Planning is very essential, right? Now let's move again. So third one, okay, what is that thing? Again, to facilitate proper coordination. Okay, again the same example can be applied as to facilitate proper coordination means what? Okay, I should be having, let's say for example in my team there are 50 people. Okay, so I should have the proper contact list of each and every person. सभी लोगों का contact list या contact numbers मेरे पास में होना चाहिए ताकि सबसे सही तरीके से मैं coordinate कर सकूं, isn't it? और अगर मैं coordinate नहीं कर पाएगा then it will be a problem for me, isn't it? So to facilitate proper coordination, communication मेरा जो मैंने बोला है वही आगे वाले की तरफ वो मैसेज पहुंचना चाहिए, isn't it? So these all things are what necessary, that planning is very very necessary for that. Okay, so आपको प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि आप सही तरीके से coordination कर सको. नेक्स्ट थिंग, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक. अगर आप प्लानिंग पहले से करके रखते हो, देयर इज वेरी फ्यू चांसेस दैट मिस्टेक्स विल टेक प्लेस अपार्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. अगर हम प्लानिंग से काम करते हैं तो हमें वो काम में अपने परफेक्शन दिखता है, वी आर एबल टू सी द परफेक्शन इन द वर्क. ओके, हमारा इफेक्टिवली काम होता है. सेकेंड थिंग, नेक्स्ट थिंग, टू एनहांस द क्रिएटिविटी. हर बार जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ नया ऐड करते हैं. वी आर ऑलवेज एडिंग समथिंग न्यू इन द एक्टिविटी. ओके, लास्ट टाइम हमने जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था तो हमने इस प्रकार से स्वागत किया था अतिथियों का. मे बी दिस टाइम विल बी ऑर्गेनाइजिंग इट इन सम डिफरेंट मैनर, isn't it? So all these things are showing us what? It is showing us the creativity of the person, right?
एग्जैक्टली. एंड देन टू एनहांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, अगर हमारे टीम वर्क में खेलते वक्त हमारे पास एक प्लान है कि आज हम आगे वाली अपोनेंट टीम को इस तरीके से डिफीट करेंगे, उस तरीके से डिफीट करेंगे, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल है, अगर हमारी टीम प्लान करती है दैट वी आर प्लानिंग दैट वी विल प्ले टुडे मैन टू मैन, ओके, मैन टू मैन कवर करके हम लोग खेलेंगे. दिस ऑल थिंग्स विल डेफिनेटली एनहांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑल्सो, राइट? यस. So these are the basic objectives of the planning, okay? Now planning not only in terms of sports but then it also in terms of administration also is very very important. Let us see it from the sports point of view, okay? Let's say for example हम लोग एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, okay? We are organizing a very big tournament or a track and field event, okay? हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई भी एक बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. वी विल बी रिक्वायरिंग द फॉलोइंग कमिटीज, इतने सारे कमिटीज हमको लगना ही लगना है, ओके? एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर जो हमें डिसीजन देता है कि आप ये कंडक्ट करो. एग्जीक्यूटिव कमिटी जो बंदा हमारे साथ में होता है कि वो आपको बोले कि चलो मैं आपसे साथ में रहूंगा, जो भी फाइनेंसेस लगने वाले हैं, जो भी इस काम करने के लिए पैसा लगने वाला है, या वॉट एवर द एक्टिविटीज आर देयर, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद दैट. ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इंक्लूड्स पब्लिसिटी कमिटी, बोर्डिंग लॉजिंग कमिटी, receptions committee, decoration committee, transportation committee, ground equipments committee, committee for entertainment refreshments, committee for entries of the programs, committee for officials. ये बहुत सारे committees होते हैं जिनका हमें जरूरत पड़ती है. We'll be discussing each of them in detail, okay, which I'll be telling you right away. चलो, let us see. So publicity committee कौन सी होती है? वो कमेटी होती है जो भी टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को तक पता तो चलना चाहिए, isn't it? Let's say for example अगर ये स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, so the who are our public, okay, the parents of the students who are in the school, isn't it? Okay, so उन तक ये बात मैसेज पहुंचाना, okay, maybe through social media or maybe by printing a banner or maybe sending some letterhead invitations to the people. इस तरीके से हम लोग पब्लिसिटी कर सकते हैं, राइट? देन ट्रांसपोर्टेशन कमिटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारा टूर्नामेंट कहीं बाहर है, ओके, इफ वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट वेयर द टीम फ्रॉम द आउट स्टेशन आल्सो आर कमिंग, सो टू रिसीव देम फ्रॉम द स्टेशन, ओके, और फ्रॉम द बस स्टॉप टू द वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट, ट्रांसपोर्टेशन कमिटी हमें लगेंगी जो कि बस का ध्यान रखे या कोई भी व्हीकल है जिसको लाना ले जाना रहा उसके लिए रखे, इजंट इट? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी, जो लोग बाहर से आउट स्टेशन से आ रहे हैं उनके लिए वो लोग रुकेंगे कहाँ पे, इजंट इट? वेयर दे विल स्टे, फॉर दैट वी नीड अ डिफरेंट कमिटी. डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी, जब हम लोग शुरू करेंगे टूर्नामेंट उसके लिए कुछ बैक स्टेज डेकोरेशन चाहिए रहेगा, ओके, स्टेज के ऊपर डेकोरेशन चाहिए रहेगा, राइट? सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स करने के लिए भी हमें एक कमिटी लगेगी, राइट? देन ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटी, बॉल्स का ध्यान रखे, पोल्स का ध्यान रखे, और वॉट एवर द काइंड ऑफ गेम इज, ओके, राइट, ट्रैक मार्किंग के लिए मार्किंग के इक्विपमेंट्स तैयार रखे, वो सारी चीजें के लिए, ओके. सो इक्विपमेंट गार्ड्स आ सकते हैं उसके अंदर में, इजंट इट? बॉल्स आ सकते हैं उसके अंदर में, राइट? सो फॉर दैट ऑल्सो उसका एक अलग से सेपरेट ध्यान रखने के लिए हमें कमिटी लगेगी. देन कमिटी फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड एंटरटेनमेंट, जितने भी प्लेयर्स आए हैं उनका लंच, स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट्स, इजंट इट? वो भी हमें लगेगा, राइट? सो उनके लिए भी एक कमेटी बनानी पड़ेगी, ओके. देन रिसेप्शन कमेटी, जो भी टीम्स आती है उनका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, हमें पता कैसे चलेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ टीम्स हैव कम फॉर द टूर्नामेंट, ओके. देन कमिटी ऑन द एंट्री एंड प्रोग्राम, है ना, जब आते हैं वही आते हैं रिसेप्शन कमिटी, अगेन द सेम थिंग. एंड अगेन कमिटीज ऑन द एंट्रीज, उनकी एंट्रीज कौन करेगा, उसके लिए हमें एक सेपरेट कमेटी लगेगी. देन कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, सारे के सारे रेफरीज, ओके, जो कि ये टूर्नामेंट कंडक्ट करने वाले हैं, गेम्स कंडक्ट करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग एक कमेटी लगेगी. देन अनाउंसमेंट कमेटी, ऑफ कोर्स माइक सिस्टम, स्पीकर सिस्टम, इजंट इट? उसके लिए एक कमेटी लगेगी. फर्स्ट एड कमेटी, किसी भी प्रकार का मेडिकल एक्सीडेंट होता है, ओके, तो उसके लिए हमको मेडिकल हेल्प के लिए फर्स्ट एड कमेटी बनानी पड़ेगी, ओके, व्हाइल प्लेइंग द स्पोर्ट्स. किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो उसके लिए हमें एक चाहिए. एंड लास्टली फाइनेंस कमेटी, ओके. सो ये एक फाइनेंस कमेटी वो होती है जो सारी चीजों के लिए हम लोग को फाइनेंस करेगी. पैसा तो लगने वाला है इन सब चीजों को करने के लिए, राइट? फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस एक्टिविटी वी विल बी रिक्वायरिंग मनी, इजंट इट? सो फॉर ऑल ऑफ दैट थिंग वी विल बी हैविंग द फाइनेंस कमेटी ऑल्सो. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग. अगर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सही तरीके से प्लानिंग करते हैं, आई एम श्योर एवरी टूर्नामेंट विल गो डेफिनेटली इन अ परफेक्ट manner right away, okay. So I hope you have understood this particular module of this chapter. This is just one part of this chapter. There are several parts in this chapter which I'll be regularly posting up in this on my channel. Plus I am coming up with a beautiful English Master Communication and Public Speaking program for you all people. I want you all to click on the subscribe button and hit the bell icon and regularly get updates of that particular English program, okay.
master English program, right? English master program, right? So that you are able to speak fluent English like me. You are able to communicate with the people effectively like me, isn't it? So therefore, for all of that particular thing, if you want to be a good public speaker, if